Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start this session and the document for today's The Hindu session has already been uploaded in our Telegram group. So you can download that document from there. आप सीधा जाके वो document वहाँ पे download कर सकते हो. It is already there. Jai Kaushik, good morning. So that document is there in our Telegram group. You can download that document from there and we are going to start this session. So Quad leaders for open free Indo-Pacific. Now we are going to look into in detail. Okay, this will be covered in detail what they are saying, how Chinese are reacting to it, China वाले कैसे react कर रहे हैं. We are going to cover up this thing in detail. इसको बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे. Okay, bureaucrats cannot be state election commissioners. We are going to look into this. Also an important statement given by the Supreme Court. Supreme Court ने बहुत important statement दी है, इसको भी देखेंगे क्या है ये. Other than that, you should cover this also. Rajasthan Information Commission penalizes 5 officials for negligence. Okay, again you need to understand, you know, the information commissioners, okay, the information commission across the country, especially your state information commission, their track record is very, you know, bad. तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बैड होता है, ठीक है ना. तो बैड रिकॉर्ड होता है वो, देयर परफॉर्मेंस इज आल्सो डाउन. सो वी लुक इनटू दिस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. इसके अंदर देखेंगे क्या ये ऐसा कर रहे हैं. ओके, नेग्लिजेंस का ये फर्स्ट केस नहीं होगा, बहुत ऐसे केसेस आते हैं जब ये नेग्लिजेंस आपको देखने को मिलती है. नाउ we'll move to add here on this particular page. Exclusive blocks should not target the third parties. China is issuing this statement and we are going to look into this. इसको भी पूरे डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं क्योंकि बेसिकली ये रिप्लाई है. ओके, क्वाड का रिप्लाई चाइनीज लोग जो है, चाइनीज लीडरशिप ने दिया है. विल लुक इनटू दैट. इसको भी अच्छे से कवर करेंगे. नाउ न्यू मीडिया रूल्स आर टाइटनिंग nose. We look into this. Again, recently government has introduced some IT related rules. तो OTT प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर OTT जो न्यूज़ हाउसेज हैं उनको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं. सो वी लुक इनटू दिस. इसको भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे. अदर देन दैट, योर कास्टिंग द एशियन डाइस ऑन द वेस्ट एशिया बोर्ड. ओके, अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एंड जीएस पेपर 2 में इसकी मेन यूटिलिटी है. तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, इफ यू सी व्हाई वेस्ट एशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू नीड टू अंडरस्टैंड आवर एनर्जी. सो वी गेट आवर पेट्रोल फ्रॉम देयर. वी हैव एनर्जी डिपेंडेंसी, हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी है उस रीजन के ऊपर. एंड इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. ओके, और कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमें नुकसान होगा. सो वी हैव टू कीप ए वॉच एंड दिस whole thing is important. We will look into this in detail. इसको डिटेल में जानेंगे क्या ये कह रहे हैं. So on this particular page if you see, so हमारे लिए important क्या है. So हमारे लिए important यहाँ पे होगा bring down the benzene emission at fuel outlets, says the panel. So we look into this, what this panel is saying. So NGT committee ने कुछ बोला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने. तो इसको देखेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे. इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. थोड़ा प्रीलिम्स के लिए आपको ठीक ठाक कंटेंट मिल जाएगा कि बेंजीन से होता क्या है, ठीक है. सो उस लिहाज से ये अच्छा है. नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर पेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स शुड नॉट टारगेट थर्ड पार्टी. वो कह रहे हैं कि क्वाड हमें टारगेट नहीं करे. सो इंडिया एंड चाइना टू कंटिन्यू LSE टॉक्स. ओके, सो डिसएंगेजमेंट विल कैरी ऑन. विल लुक इनटू दिस. के अंदर कुछ खास होगा नहीं. जब डिसएंगेज हो जाएंगे तब हमें पूरा कहानी समझ में आएगी. नाउ स्टॉप इनफ्लक्स फ्रॉम द म्यांमार. सेंटर हैज इशूड द स्टेटमेंट्स. अर्लियर मिजोरम गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, दे वर सेइंग दैट दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी. सो इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे. ओके, सो नाउ द सेंटर हैज कम आउट विद द इंस्ट्रक्शन. तो इसको अच्छे से कवर किया जाएगा. सो सेंटर्स रिप्लाई सॉट ऑन प्ली अगेंस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट. तो ये क्या कह रहे हैं, पूरे मामले को अच्छे से देखेंगे क्या है इसके अंदर, इसको आपको कवर करना है. ओके, सो local medical boards may be help to rape survivor, Chief Justice of India is saying. We look into this statement, what he exactly wants to say, क्या वो exactly कहना चाहते हैं. So other than that, let's move to next part. सीधा हम next part पे आते हैं and the next part is
this particular page here, Russia for Taliban's inclusion in Afghan interim government. Okay, so we'll look into this. Now Moscow process has already been started by Russia to improve, ओके कि कैसे अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन इंप्रूव की जाए. नाउ रेलवे फ्रेट यूजेज सरपासेस द फाइनेंशियल ईयर 20 लेवल. वी लुक इनटू दिस. इसके अंदर देखेंगे क्या इन्होंने कुछ कहा है. सो लेट्स मूव टू आवर डिटेल डिस्कशन सेक्शन. दिवेंद्र गुड morning. Okay, Mohit good morning, Imran good morning. So this is our detailed discussion section. So इसको हम डिटेल डिस्कशन करते हैं. So आज देखते हैं क्या ये कहना चाहते हैं. So before doing that, let me change the color of a pen. So आज पर्पल कलर के पेन से हम काम करेंगे. So okay, so quad leaders for open free Pacific. Now this is important. You need to understand there is a debate here also. One is this Indo-Pacific. From where do you get this term? Okay, this term was basically introduced by US in their security document. उनका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया था और वहां पे ये टर्म जो है बताई गई थी. ओके, सो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के अंदर ये टर्म बताई गई थी कि इंडो पैसिफिक क्या है. नाउ द आइडिया इज दैट आप इंडियन ओशियन को कवर अप करोगे. ओके, और साथ साथ कवर करोगे पैसिफिक ओशियन को. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेन यू कवर इंडियन ओशियन, सो अफ्रीकन नेशंस आर ऑल्सो गिवन सम स्पेस. अफ्रीकन नेशंस को भी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मिल रहा है. मीन्स इंडो पैसिफिक इज मोर इंक्लूसिव टर्म. ओके, मोर इंक्लूसिव टर्म. नाउ क्यों मोर इंक्लूसिव है? बिकॉज डिबेट ऐसी चलती है रशिया एंड चाइना. They say that Indo-Pacific should not be the term, Asia-Pacific should be the term. Okay, कि आप Asia Pacific की बात करो. Now Russia and China, they both have apprehension that Quad, okay, or this Indo-Pacific, it is formed on the ground of anti-Russia एंड एंटी चाइना. इनको लगता है कि ये एंटी रशिया और एंटी चाइना है एंड दिस इज अ डिजाइन बाय यूनाइटेड स्टेट्स और इनको टारगेट करने के लिए ये डिजाइन इन्होंने बनाया है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड apart from this geopolitics consideration, Quad has very diverse role to play. So focus on vaccine, climate change, emerging technologies. Okay, so these things are also important and these are also part of the discussion. So in future, if you see, some experts are saying definitely there is a scope for Quad plus, कि आप क्वाड को एक्सपैंड भी कर सकते हो एंड यू कैन इंक्लूड कंट्रीज लाइक वियतनाम, यू कैन इंक्लूड Malaysia, Indonesia, Philippines. These countries can also part of this particular group. And member of Quad will become closer than ever. This is what our Prime Minister is saying. Okay. So Joe Biden, Japanese Prime Minister, Australian Prime Minister, they highlighted the cooperation among the member countries to beat the global pandemic. Now their focus is on vaccine. Okay. So there is also a suggestion. What's the suggestion? We know that India is a biggest manufacturer of vaccine in the world. So can we have quad vaccine? Okay, क्या एक quad vaccine बना सकते हैं हम? Quad vaccine means funded by quad. This particular vaccine will be funded by quad countries. Okay, and you can distribute this vaccine. आप इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर. जो आपका वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड है उनको जो है आप ये वैक्सीन जाके दे दोगे. अफ्रीकन कंट्रीज को जाके आप ये वैक्सीन दे दोगे. सो इसका बेनिफिट क्या होगा? वन थिंग इज दैट यू हैव टू काउंटर चाइना, और चाइना भी अपनी फ्री वैक्सीन दे रहा है. तो चाइनीज आर गिविंग देयर फ्री वैक्सीन, सो यू हैव टू काउंटर दैट. आपको भी अपनी फ्री वैक्सीन निकाल के काउंटर करना पड़ेगा. अब प्रेजेंटली इंडिया माइट नॉट बी हैविंग द कैपेसिटी टू ऑफर फ्री वैक्सीन टू ऑल, बट विद द क्वाड्स एग्जिस्ट असिस्टेंस, क्वाड अगर थोड़ा असिस्ट कर दे, सो वी कैन ऑल्सो गिव आर फ्री वैक्सीन. हम लोग भी अपनी फ्री वैक्सीन निकाल सकते हैं क्वाड कंट्रीज वाली. ओके, एंड आवर आइडिया इज दैट यू हैव टू लुक इनटू द वैक्सीन थिंग. Then climate change is also emerging or very important agenda. Emerging technologies are important agendas. So how these emerging technology, तो जब आप emerging technology की बात करते हो, you need to understand cyberspace. Okay, this is also an agenda. Cyber security is an agenda. Space
एक्सप्लोरेशन, दिस इज एन एजेंडा। सो इन चीजों के ऊपर जो है ध्यान हमारा फोकस जो है वो है यहाँ पे। सो क्वाड मेंबर्स एग्री टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, अ ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द समिट। वी विल ज्वाइन फोर्सेज टू एक्सपैंड सेफ अफोर्डेबल इफेक्टिव वैक्सीन प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू स्पीड इकोनॉमी रिकवरी एंड बेनिफिट हेल्थ ऑफ ऑल, ओके, बेनिफिट ग्लोबल हेल्थ। जिसके लिए जो है ये स्पीड अप करेंगे, इक्विटेबल वैक्सीन निकालने की बात इन्होंने बोली है। सो मिस्टर बिडेन एम्फेसाइज दैट इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन शुड बी गवर्न इन अकॉर्डेंस विद ह्यूमन राइट्स, ओके, तो ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे एक तरीके से रिस्पेक्ट किया जाएगा। सो फर्दर दे आर सेइंग दे आर रिन्यूइंग देयर कमिटमेंट टू एंश्योर दैट देयर द रीजन इज गवर्नड बाय इंटरनेशनल लॉ। सो बेसिकली फोकस इज बैक ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। यूएस ऑल्सो, यूएस इज बैक ऑन ग्लोबल गवर्नेंस, यूएस भी वापस ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर वापस आ गया है। क्यों? बिकॉज बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टुक यूएस, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस को कहां लेके गया था? आइसोलेशन की तरफ लेके गया था। ओके, नाउ यूएस इज कमिंग बैक और यूएस यहां पे आपको वापस आता हुआ नजर आ रहा है। सो मॉरिसन लेड आउट द एजेंडा ऑफ क्वाड इन नियर फ्यूचर एंड दे आर गोइंग टू ज्वाइन हैंड्स, ओके। सो प्राइम मिनिस्टर सुगा एक्नॉलेज द न्यू डायनामिज्म दैट क्वाड हैज रिसीव्ड बिकॉज द मीटिंग ऑफ टॉप लीडर्स। सो विद द फोर कंट्रीज वर्किंग टुगेदर दे आर विशिंग दैट दे विल एडवांस देयर कोऑपरेशन। सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है वो आगे बढ़ेंगे और फ्री इंडो पैसिफिक को जो है इन्होंने एक तरीके से फोकस में लेके आए हैं ये। तो ये सारी डिबेट चल रही है। नाउ ही सेड यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया वुड फाइनेंस द वैक्सीन इनिशिएटिव दैट द इंडिया वेलकम्ड, ओके। सो ये लोग हमें पैसा दे देंगे। हमारा इनिशिएटिव क्या है? वी हैव अ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, ओके, वी हैव अ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव एंड वी आर गिविंग वैक्सीन टू ऑल आवर फ्रेंड्स एंड अदर हु हैव डिमांडेड इट, ओके। सो उसको लेके हम चल रहे हैं। नाउ क्वाड कंट्रीज आर सेइंग दैट दे विल लाइक टू फंड दैट और इसलिए हमें इसको वेलकम करना चाहिए एंड वी हैव डन दैट। नाउ फर्दर you know the statements have been given related to Myanmar से related भी कुछ बातें कही गई हैं। Now we look into the reply by Chinese, okay। Now what Chinese are saying? So this is important statement. They are saying that Chinese has said cooperation between nation should not target or damage interest of third party and countries should not pursue exclusive blocks. What does it mean? It means that your block शुड बी इंक्लूसिव, आपका ब्लॉक जो है वो इंक्लूसिव होगा। इट मीन्स दैट दे आर सेइंग दैट जो क्वाड है क्या पता उसको एक्सपेंड करके चाइना को भी मेंबरशिप देनी चाहिए, ठीक है। First, they are saying that you should not target the third countries. Basically, they know that Quad bloc is in existence because they want to counter China. They want to contain China. सब लोग चाइना को contain करना चाहते हैं, सब लोग चाइना को counter करना चाहते हैं. So this is what they have said. Okay. So ये इन्होंने अपनी ऐसे जो है एक statement दी है, एक apprehension इन्होंने अपनी दर्ज कराई है. So they hope that the relevant countries uphold the principle of openness, inclusiveness, and win-win result, and refrain from pursuing exclusive bloc. Do things that are conducive to the regional peace and stability. This is what they want to say. Okay, so basically they see Quad as a US led initiative which is aimed at containing the China. Now you need to understand, we have given energy to Quad, we are focused upon Quad because China is assertive, and recently we had a border skirmishes, border dispute, एक major incident हुआ, गलवान incident, okay, and forces were facing each other. Presently जो है अभी भी forces एक दूसरे को face कर रहे हैं. So in that line this statement has been given, और हमारे लिए भी important है कि हम Quad countries के साथ आगे बढ़े, okay, because Quad countries are democratic countries, वो democracy है वहाँ पे, and these countries are open, these countries are clear about it, okay. So this is what Chinese are saying. They are saying that this Quad should not be anti China. तो ये anti China बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको जो है लगता है, okay. So China has said it wants a reset with new Biden administration, but has led the blame for past 4 years of strained ties at the door of Washington. तो ये भी चाइना ने बोला है कि यूएस के साथ they are ready to work together, यूएस के साथ वो साथ में मिलकर काम करेंगे, बट जो है उसमें टाइम लगेगा क्योंकि पिछले 4 साल में बहुत डैमेज हो चुका है. Now we look into this, bring down the benzene emission at fuel outlets, okay. So fix vapor recovery system to improve the air quality. NGT appointed committee is saying this, okay. So this joint committee appointed by NGT to study air pollution in Kerala has recommended the installation of vapor recovery system at fueling station and retrofitting of diesel vehicles with particulate filters to improve the air quality, okay. So एक तो डीजल जो व्हीकल्स हैं उनको बोला है कि उनके अंदर जो है रेट्रोफिट किया जाए ताकि
जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव किया जा सके. So report submitted before the southern bench of tribunal pointed out that the petrol refueling station were a major source of benzene emission. कि पेट्रोल पंप जो है वहां से बहुत ज्यादा बेंजीन एमिशन होता है. ओके, देयरफॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ वेपर रिकवरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट स्टेप. आप एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो है वेपर रिकवरी सिस्टम इंस्टॉल करें. ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ये पेट्रोल पंप पे आपको जो है जब पेट्रोल आपके व्हीकल में डल रहा होता है तब बहुत ज्यादा एमिशन होता है, तो उसको देखते हुए ये स्टेटमेंट डाली गई है. Now further they are saying that the joint committee comprises officials of Ministry of Foreign, Environment, Forest. Okay, this is about the composition of the ministry. So panel recommended stringent action against industrial unit that do not comply with emission norms. Stringent action lena chahiye. Diesel generators, the pollution control board has already suggested retrofitting of emission control devices of generator and replacing diesel generator with gas based one. Okay, so that they are saying that you replace the diesel generator with the gas based one. Other recommendations include promoting battery operated vehicles, banning old diesel vehicles in a phased manner, greening of open area, creation of green buffers along the traffic corridors. So these are some of the suggestions and you can write all these things. Okay, आप ये सारी की सारी चीजें अपने आंसर में लिख सकते हो. You can mention about all these things in your essay if you are writing an essay. These are the suggestions. Okay, these are basically suggestions that an administration can do. Now further they are saying that introduction of wet or mechanized vacuum sweeping of the roads, controlling dust pollution. ये भी इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो डस्ट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है. ओके, सो फर्दर ट्रिब्यूनल हैज आस्क्ड कमेटी टू असेस द एयर क्वालिटी इन द पोस्ट पैंडेमिक फेज टू स्टडी द सिनेरियो व्हेन एक्टिविटीज आर एक्सपेक्टेड टू पीक. ओके, सो एज यू नो लॉकडाउन के टाइम पे एयर काफी क्लीन हो गई थी. अब इन्होंने बोला है कि उसको देखो कि क्या चीज बड़ी है. Now bureaucrats cannot be state election commissioner, so independent person should hold position. Now Supreme Court on Friday held that the independent persons and not bureaucrats should be appointed state election commissioners. Okay, now this statement has given, because why this statement has given, you need to understand. If you are appointing bureaucrats, अगर आप bureaucrats को appoint करते हो, so they will work to हेल्प देयर पॉलिटिकल मास्टर्स. तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को हेल्प करने के लिए भी वो काम करेंगे. ओके, तो यही प्रॉब्लम आती है. नाउ इफ यू वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन योर पंचायत, अगर आपको आपके पंचायत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली दिस सजेशन इज वैलिड. ओके, कि आप जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर स्टेट ब्यूरोक्रेट्स को जगह ना दें. सो बेंच लेड बाय जस्टिस रोहिंगटन said giving government employees the additional charge of state election commissioners is a mockery of constitution. जो अपनी सर्विस में चल रहे हैं उन्हीं को ही आप एडिशनल चार्ज दे देते हो, ये ठीक नहीं है बिल्कुल. ओके, सो टॉप कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट that state should appoint independent person as election commissioners all along the length and breadth of the country. तो ये सब जगह लागू होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर. आप किसी को एडिशनल चार्ज कैसे देते हो जो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय होगा या कहीं पे भी एम्प्लॉय होगा. सो गिव अप द पोस्ट. इट सेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स एज एडिशनल चार्ज शुड गिव अप द पोस्ट. सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स डायरेक्शन शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशंस कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट. Along with that, they are saying it was disturbing to see government employees manning the state election commissioners as an add-on jobs. We already वो काम कर रहे होते हैं, एक additional काम जो है वो state election commissioner का करने लग जाते हैं. Now state government ऐसा क्यों, ये ऐसा state governments क्यों करते हैं? You need to understand, पंचायत election जो है वो आपके एक बार होंगे. ओके, आफ्टर दैट 5 years यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी इलेक्शन. आपके 5 साल तक कोई इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती. सो इन दैट सिनेरियो इफ यू आर अपॉइंटिंग एन ऑफिसर, परमानेंट ऑफिसर अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो तो वो 5 साल तक क्या पता उसके पास काम भी ना हो. ओके, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ये थोड़ा बहुत जस्टिफाइड होता है, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर दैट द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट और वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आके काम ना करे. So from that perspective, yes, independence should be maintained. So judge criticized the Goa government for giving its law secretary the additional charge of state election commissioner. Now under the constitutional mandate, it is the duty of state not to interfere with the functioning of state election commission. The judgment came on an appeal against order of Bombay High Court, which has set aside the election notification issued by Goa State Election Commission
in the municipality of Margoa, Mapusa, Marmagua, Selgam, Koipen. So, Supreme Court ordered the Goa State Election Commission to issue notification for Panchayat within 10 days and complete the election process by April 30. तो ये instruction दी गई है. मतलब means it is clear that State Election Commission should also be, independent of the state government. और अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही वो एडिशनल चार्ज दे दोगे तो वो तो बर्डन में आ ही जाएगा, बिकॉज उसके पॉलिटिकल मास्टर्स होंगे. सो राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन पीनलाइजेस 5 ऑफिशियल फॉर नेग्लिजेंस. सो एज आई टोल्ड यू, अब आपको ये समझना है आरटीआई की इम्प्लीमेंटेशन क्यों पुअर होती है, बिकॉज देर इज नो पीनल प्रोविजन अगेंस्ट द ऑफिसर. अगर कोई ऑफिसर अपनी काम को अच्छे से नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता. तो इट इज अ वेलकम स्टेप दैट राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन इज डूइंग समथिंग. अदर क्रिटिसिज्म इज दैट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस दे आर डिसफंक्शनल. ओके, तो वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं. So from that perspective, this is also good that Rajasthan Information Commission is really working. So Rajasthan State Information Commission has adopted a tough stance against government officials showing negligence in providing the information under the right to information. So Commission has imposed fines on 5 officials of different departments and passed adverse remarks about their conduct. Okay, so 2 officials of rural development and panchayati raj are fined with 15,000 each. तो 15,000 का उनके ऊपर फाइन लगा है. This is really good. Okay, so you can mention about, see, if you are writing an answer in say question on RTI related issue, so this is the current incident. Okay, if you mention about this current incident that Rajasthan Information Commission has penalizes the officials, okay, but this is not a trend country over trend is that state information commissions are not doing their duty. वो अपना काम ढंग से नहीं करते हैं. Okay, so state information commission Lakshman Singh slapped a fine of 15,000 on the then village development officer of Satta Panchayat. Okay, उनके ऊपर ये लगाया गया है. The commissioner also imposed 15,000 fine on village secretary ऊपर भी फाइन लगाया गया है. So state information commission imposed fine of 5,000 on secretary of urban improvement trust. Okay, so ये जो है फाइन लगाया है इन्होंने, मींस दे आर वर्किंग इन अ प्रोएक्टिव मैनर. नाउ न्यू मीडिया रूल्स आर अ टाइटनिंग नोज. व्हाट दे आर सेइंग रिलेटेड टू न्यू मीडिया रूल्स. ओके, सो व्हाट इज वरिंग इज द एग्जीक्यूटिव्स आइडिया दैट यूजर नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वेरी मीडिया that seek to inform them. Okay, now you need to understand information technology rules 2021 notified towards the end of February by Ministry of Electronics and Information Technology should not come as a surprise because it is of a piece with the systematic incremental erosion of freedom of speech and expression. Okay, अब ये कह रहे हैं कि because of this systematic erosion of freedom of speech and expression यहाँ पे हो रहा है. Now you need to understand, in India we know that we don't have absolute freedom. आपके यहाँ पे absolute freedom नहीं है. Okay, so you have reasonable restriction. So reasonable restriction का clause भी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है. Okay, from that perspective things are correct, but they are saying it is going to impact the freedom of speech and expression. Now it is important on our part that these new news media houses or news media platform should be accountable. इनको accountable बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है? For that the mechanism should be self regulation. Okay, कि गवर्नमेंट को सेल्फ रेगुलेशन करना था और यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो नहीं किया. एंड यहाँ पे देयर इज अ एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन नजर आएगी यहाँ पे. ओके, बिकॉज कहाँ आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन नजर आएगी? बिकॉज दीज रूल्स हैव सजेस्टेड दैट देयर शुड बी थ्री टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म वहां पे लगाना पड़ेगा. ठीक है ना, तो ये 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको लगाना पड़ेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट, ओके, न्यूज मीडिया हाउसेज आर सेइंग दैट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये स्टेट का इंटरवेंशन होगा. फ्रॉम ऑल अपीयरेंसेज द ओवरआर्चिंग इंटेंट ऑफ दिस सेट ऑफ रूल इज टू पुट इन प्लेस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म for the end user and consumer of the social media and over the top platform. Okay, so that of course would normally be an unexceptional public purpose, but in an already vitiated climate of overweening political and religious majoritarian, where the street tends to whip up and aggressively nurse. Okay,
now drive a sense of outrage and hurt on any and every and irrespective of the institutional procedure of the safeguards. The nature and the scope of bulk of grievances can easily be imagined. Okay, now they are saying that they can have a bad impact over the freedom of speech, and these firms might not be able to work freely. ये ढंग से काम भी नहीं कर पाए. Okay, now further, the smaller and the medium sized independent digital news and current affairs portal, which are for the most part struggling to stay afloat irrespective of whether they are newer startups or have been around for a year, will be ones hardest hit by this redress requirement. Any criticism of ruling party or government could trigger an orchestrated avalanche of grievances. Okay, अब बात ऐसी है कि रूलिंग पार्टी भी यहाँ पे पार्टनर हो सकती है, एक्टिव हो सकती है. वाई रूलिंग पार्टनर? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही बातें कही जाएंगी. ओके, सो न्यूज मीडिया हाउसेस बेसिकली दे आर गोइंग टू राइट अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट. जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही लोग, उन्हीं के अगेंस्ट जो है यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, उन्हीं लोगों को क्रिटिसाइज किया जाएगा. सो इन दैट सिनेरियो इट इज लाइकली दैट द रूलिंग पार्टी माइट हैव मोस्ट ग्रीवेंसेस. बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस उन्हीं रूलिंग पार्टी के ही होंगे यहाँ पे. ओके, सो रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, द sheer process of such grievance handling can stymie the operations of relatively smaller digital ventures. जो छोटे digital ventures हैं उनको मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, because you need to appoint an officer. आपको अलग से एक डेडिकेटेड पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड दीज स्मॉल न्यूज हाउसेज दे माइट नॉट बी इन अ कंडीशन टू अपॉइंट दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो कैसे उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे? ओके, नाउ फर्दर मेक्स अ मॉकरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन विद एन इंटरनल मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, in effect becoming an appellate authority over self-regulatory exercise. That there will be a separate interministerial committee, okay, which will work as an appellate authority, और वो इसके ऊपर काम करेगी. Means here there is a direct intervention by the government. Okay, and this would be a self regulation by media organization and the industry at the government pleasure. It means that when we say you have to encourage the self regulation, but this self regulation is at the government's pleasure, कि गवर्नमेंट्स प्लेजर के अकॉर्डिंग ये हमें करना पड़ रहा है. नाउ व्हाट इज वर्स, द नोटिफिकेशन गिव्स द सेक्रेटरी, द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ad hoc emergency power to block any content the government considers problematic even without such token procedure. So negation through distortion of idea of self-regulation is really the nub of the matter, and at least as far as section pertaining to publisher of news and current affairs in the notification is concerned. So real and imagined grievance out there becomes a alibi for this clumsy sleight of hand, whereby the government can in fact prescribe, oversee, overrule. Okay, so overrule कर सकते हैं, prescribe कर सकते हैं, self regulate कर सकते हैं. So pose a financial threat. A measure like this moreover jeopardize the very sustenance of the already financially sustained and financially beleaguered digital news media, unless that is very intention. Monetization avenues became scarce, and investors and brand run scared because of what they see as a political consideration. अब लोगों को यहाँ से डर लगने लग जाएगा. Okay, so what makes this notification seem more diabolic is the ham-handed censorship in a buzz. तो basically इसको censorship के तौर पे देखा जा रहा है कि if news media houses they are publishing something against the government, then the government will definitely use these rules to curb the वॉइस ऑफ मीडिया. तो उसको रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, सो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के पिलर को इरोड कर रहा है. ओके, एंड वी नो दैट मीडिया इज कंसीडर्ड एज अ fourth pillar of democracy. Okay, so media is considered as a fourth pillar of democracy, and media fights for the poor. Okay, poor के लिए media जो है वो fight करता है. You need to understand. So the case for organic self regulation by news media as against by external authority of body becomes more focused and urgent in the context of this notification. The many anecdotal symptom of a censorship mindset we see growing around. So basically they are saying that the government has the mindset of censorship, और वो हर चीज को सेंसर करना चाहते हैं. Okay, from that perspective these steps are wrong, and definitely it is against the right to freedom of speech and expression. उसके against ये बिल्कुल जा रहा है. Okay, so ये कुछ बातें इन्होंने कही हैं. So
फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट बी डायनेमिक, ठीक है, एंड इट शुड वर्क एज अ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि वो जो है बाकी तीन पिलर्स के साथ जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करें. मीडिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, स्क्रूटनी करने का काम करता है मीडिया. ओके, सो उन चीजों को देखते हुए जो है दीज स्टेप्स आर रॉन्ग. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड there are some other risks, okay, that government might use weapons like sedition law, they might use weapons like unlawful activities prevention act. Okay, already the environment is like this, that government is curbing the dissent, and there are more steps that the government can take. Government can become offensive, but it is not good for the health of the democracy. ये हमारी डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. यू हैव टू अपहोल्ड द ट्रुथ. ओके, जो सत्य होता है उसको जो है बिल्कुल आपको लेके आगे लेके जाना होगा. एंड गवर्नमेंट हैव टू चेंज इट्स माइंडसेट, और गवर्नमेंट को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. ओके, देयर आर मेनी इश्यूज रिलेटेड टू मीडिया. यस, वी नो दैट रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, मीडिया रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, मीडिया रेगुलेशन आपको चाहिए, बट यू हैव टू एनकरेज सेल्फ रेगुलेशन. आपको सेल्फ रेगुलेशन को एनकरेज करना है, बिकॉज गवर्नमेंट इम्पोज रेगुलेशन माइट नॉट बी दैट इफेक्टिव. वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा. ओके, so let's move to next part, casting the Asian dice on West Asia board. So as the complicated nature of security across the geography changes, the Asian footprint is expected to only grow. This month, a contingent of Indian Air Force, including fighter aircraft and over 120 personnel, for the first time in the midst of multi-nation exercise hosted by UAE, named Desert Flag. Okay, now this is important for your prelims, not only for UPSC prelims. This is also important for, say, state services. Okay, if you are preparing for state services, उसके लिए भी ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, दैट विच नेशन हैज ऑर्गेनाइज द डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज. तो ये आपको याद रखना है कि यूएई ने जो है इसे ऑर्गेनाइज किया है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज, अगेन दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट. सो अदर देन इंडिया, यूएई, बहरीन, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, US are also participating, offering an interesting view of New Delhi, of the various geopolitical intricacies at the play and around the West Asian region. Now, this West Asian region is important from the geopolitical point of view. You need to understand, we are dependent on the region for our energy. हम अपनी एनर्जी के लिए इस जगह पे डिपेंडेंट है. एंड वी हैव अ गुड नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ पे जो है काम करते हैं, एंड दे सेंड देयर रेमिटेंसेस. वो अपने रेमिटेंसेस को इंडिया में भेजते हैं. दस दिस वेस्ट एशियन कंट्रीज आर अ गुड सोर्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व. वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए भी अच्छा एक सोर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग वहां से अपना पैसा कमा के इंडिया में भेजते हैं. ओके, सो दीज थिंग्स शुड बी नोन टू यू. यू शुड कीप एन आई ओवर इट. ओके, दैट दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So West Asia is having a very complex security conundrum, okay, because there are multiple players. So here you have US, which is an active member, UAE, Saudi Arab is there, Iran is there, Israel is there. Okay, so this is the complexity of the region. यहाँ पे पूरा का पूरा complex region है. Yes, recently things have improved. So with the Abraham Accord, situation has improved. चीजें जो हैं वो बेहतर हुई हैं अब्राहम अकॉर्ड आने के बाद. ओके, एंड इजराइल के साथ अरब कंट्रीज हैव स्टार्टेड improving their relations. It is a good welcome step. Okay, but the idea is that it is considered as anti-Iran activity. इसको एंटी ईरान एक्टिविटी के तौर पे देखा जाता है. एंड प्रेजेंटली इफ यू सी the Biden administration, they want to revive JCPOA, okay, Joint Comprehensive Plan of Action. So basically they might revive this deal and may ask Iran को ऊपर जो sanctions लगे हैं वो sanctions remove कर दिए जाएंगे. And if those sanctions are removed, Iran will be back in the economic activity में ईरान वापस आ जाएगा. But the problem is that it might further aggravate the crisis. Okay, and because the Saudi Arab and the Israeli, they are not happy with this. वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि ईरान जो है वो वापस इस पूरे एरिया की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाए. ओके, सो दिस इवेंट इज गोइंग ऑन, दिस सिनेरियो इज गोइंग ऑन. सो अ फेडिंग यूएस होल्ड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो एज यू नो यूएस का इंटरेस्ट अब वेस्ट एशिया से हट के इंडो पैसिफिक की तरफ ज्यादा है. ओके, बिकॉज यूएस इज नाउ फोकसिंग ऑन चाइना. यूएस
मेजरली अब चाइना के ऊपर फोकस कर रहा है, एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इफ यू सी दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस वेस्ट एशियन रीजन, और वो वहां से दूसरी तरफ जा रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाई दिस दीज कंट्रीज दे हैव सम एप्रीहेंशंस अबाउट द सिक्योरिटी, और इन कंट्रीज को सिक्योरिटी का डर है. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अलायंस, और इसीलिए वो अलायंस जो है वो बना रहे हैं. So one reason is that China factor. Other reason is that shale gas. Okay, shale gas is also another reason because of which US is not having interest in this region. US का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इस रीजन के अंदर. ओके, इसलिए वो दूसरी जगहों पे जा रहे हैं. ठीक है. So Iran and the tension. So these realities, both India, South Korea have found themselves caught in the regional tension. So Iran जो है दे माइट रीस्टार्ट दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, वापस नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए और सैंक्शंस जो है वो हट जाए. ओके, इफ सैंक्शंस आर रिमूव डेफिनेटली इट विल बी अ गुड गुड स्टेप फॉर अस, बिकॉज वी हैव एन इन्वेस्टमेंट इन शाह बहार पोर्ट. हमने शाह बहार पोर्ट के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया गया है. ओके, अगर ये सैंक्शंस हटते हैं तो हम उसको रिवाइव कर पाएंगे और अच्छे से उसके ऊपर काम कर पाएंगे. सो आइडिया ऑफ एशियन नेशंस हैव टू बी बैंड टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर एनर्जी इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया is not new. Indian diplomats have even suggested that an idea equitable to importers OPEC or Organization of Petroleum Exporting Countries led by Asian states which today have a much larger stake in West Asia's oil than West. Okay, so idea is that जैसे जो है एक OPEC कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है, इन दैट लाइन यू कैन फॉर्म अ ग्रुप फॉर इंपोर्टर्स. आप इंपोर्टर्स के लिए भी वो एक ग्रुप बना सकते हो. लाइक एक्सपोर्टर्स आर फॉर्मिंग अ ग्रुप. ओके, यू कैन हैव अ ग्रुप फॉर इंपोर्टर्स. आप इंपोर्टर्स के लिए भी एक ग्रुप बना सकते हो. सो गायत्री, गुड मॉर्निंग. Meenu Mir, good morning. So India's securities footprint in West Asia has seen a steady increase, and energy security and safe passage of sea routes are of the main driving factors. Now sea route का कहाँ से आ गया? If you see यहाँ पे पायरेसी का इशू है. ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, पायरेसी का इशू है. सोमालियन पायरेट्स यहाँ पे एक्टिव हैं. यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव. तो आपको अपने जो इंटरेस्ट हैं नेवल वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है. सो इंडियन नेवी हैज मेड मल्टीपल पोर्ट्स call for UAE, Kuwait to Iran, Qatar in recent years. In 2020, India had also planned its first bilateral naval exercise with Saudi Arabia, which was postponed due to coronavirus. Okay, so Saudi Arabia के साथ हमारी naval exercise भी आ रही है. So this trend of increasing Asian security interest and footprint is expected to only magnify in the years to come. और चीजें और बेहतर होंगी that these Asian countries will join hands together. So local medical board may be of help to rape survivors, says the Chief Justice of India. So what they are saying that district level पे help होनी चाहिए, district level पे assistance होनी चाहिए. So Supreme Court on Friday asked the government to respond to a plea to constitute district medical board with expert gynecologists and even pediatrician to help rape survivors. Okay, now a bench led by Chief Justice of India Sharad Bobde has hearing the case of 14-year-old rape survivor seeking an abortion. However, following a report from the medical board to which the top court has referred her, she withdrew her plea for termination of pregnancy. But advocate Biju, appearing for girls, said the case highlighted the need for setting up of medical boards in every district so that rape survivors could benefit from early medical intervention and not to force to go for trauma. Okay, so ये बात है कि अर्ली अगर मेडिकल हेल्प मिल जाती तो डेफिनेटली इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी. चीफ जस्टिस सेड अ रेप सर्वाइवर शुड रिसीव टाइमली एड एंड एडवाइस ऑन एक्सरसाइज to exercise her rights and options. There should be some mechanism for that. It will be helpful if there is a local board. अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बोर्ड बनेगा तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. Some clauses against the principle of secularism. जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की यहाँ बात हो रही है तो देखते हैं क्या कहते हैं ये. सो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू प्ली challenging a special law enacted in 1991 by the Congress government which freezes the status of place of worship as it was on August 15, 1947. A bench led by Justice Bobde issued notice to Union Ministry. Okay, तो उन्होंने इस प्रोविजन से, इस एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड कुछ बातें इन्होंने बोली हैं. सो मिस्टर उपाध्याय सेड आर्बिट्रेरी irrational and retrospective cut off date bars Hindu, Jains, Buddhists, Sikhs from approaching courts to reclaim their places of worship which were invaded and encroached upon by the fundamentalist barbaric invaders. Okay, so अब ये कुछ एक्ट के प्रोविजन है. The act declared that the character of the place of worship pilgrimage shall be maintained as it was on August 15, 1947.
ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए जैसा 1947 में था. अब एज यू नो मैनी ऑफ द टेम्पल्स हैव बीन डिमोलिश्ड, और वहां पे दूसरे रिलीजियस जो है एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए गए थे. तो उन चीजों को देखते हुए ये बात बोली है. सो दैट्स व्हाई दे वांट दैट सेंटर शुड रिस्पॉन्ड कि कैसे ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जाता है दिस पर्टिकुलर क्लॉज. ओके, कि आप जो है उस प्लेस को तोड़ के क्या पुराने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहते हो, वो सारी डिबेट यहाँ पे चल रही है. सो एक्ट प्रेजेंटली सेज दैट 1947 में जितने भी स्ट्रक्चर थे वैसे ही वैसे मेंटेन रहेंगे, आप तोड़ के पुराने स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे. ओके, सो ये डिबेट इन्होंने यहाँ पे डाली है. सो स्टॉप इन्फ्लक्स फ्रॉम म्यांमार से सेंटर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टोल्ड दैट दे डू नॉट हैव द पावर टू ग्रांट रिफ्यूजी स्टेटस. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड. वी हैव नो डेडिकेटेड, हमारे पास कोई डेडिकेटेड रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है. आपके देश में कोई डेडिकेटेड रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो इन चीजों को एक्सप्लेन कर सके. दैट्स व्हाई देयर इज कंफ्यूजन, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. ओके, सो नॉर्मली हम करते क्या है, इफ यू नो वी हैव अ नेहरू गाइडलाइंस. ओके, नेहरू गाइडलाइंस है इसके ऊपर बस. और ये नेहरू गाइडलाइंस कब दी गई थी, व्हेन दलाई लामा केम टू इंडिया. अब वो दलाई लामा उस टाइम पे इंडिया में आए थे 1959-60 के आसपास. सो दैट सिनेरियो वाज डिफरेंट. प्रेजेंटली एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट. आपके टाइम में प्रेजेंट एनवायरनमेंट बहुत ही डिफरेंट है. सो डेफिनेटली यू नीड अ डेडिकेटेड रिफ्यूजी पॉलिसी. आपको एक डेडिकेटेड रिफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत है. ओके, तो उसकी जरूरत है. क्यों? क्योंकि आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए आपकी ब्यूरोक्रेसी के लिए. यहां पे प्रॉब्लम यही आ रही है. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिटन टू चीफ सेक्रेटरीज ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर लॉ टू चेक द इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमारीज इनटू इंडिया. ओके, now idea is that these states earlier they were saying that they don't have any instruction from the center and they don't know how to handle the situation. तो इन स्टेट्स को पता ही नहीं था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस स्टेप इज नाउ गेटिंग क्लियर कि कैसे गवर्नमेंट जो है चीजों को क्लियर कर रही है. सो मिनिस्ट्री सेड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैड नो पावर टू ग्रांट रेफ्यूजी स्टेटस टू एनी फॉरेनर. इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 एंड 1967 protocol. Now this fact is important. This fact is important. क्यों? ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी ही नहीं है. ओके, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी to this particular convention and this particular protocol. Okay, so Myanmar is military, they are going for a crackdown and that's why people are migrating to India. So large scale अगर influx Indian territory में हो जाता है तो ये आपके लिए एक major law and order की problem बन सकती है. Okay, law and order की problem बनेगी आपके लिए, plus यू हैव टू मैनेज फॉर देयर फूड सिक्योरिटी. आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा होगा. ओके, सो इफ यू नो द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, so Bangladesh liberation war, one of the reason for India's coercive action is that it was causing a influx of refugee to India and there was a major food security crisis. आपके देश में फूड सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा जो रिफ्यूजीज आपके यहाँ पे आएंगे. ओके, सो ये पूरी कहानी यहाँ पे चल रही है. दैट्स व्हाई यू हैव टू give clear instructions to the state government और state government कैसे यहाँ पे act करेगी. So Russia's for Taliban's inclusion in Afghan interim government, this is what they are saying. So US president is reviewing whether to completely pull out the troop from the country by May. Russia said on Friday it backed the Taliban's interim इंटीग्रेशन इनटू द फ्यूचर इंटरिम गवर्नमेंट. ओके, तालिबान को इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेट कर दो फ्यूचर इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर. ओके, ताकि वो लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें. सो वाशिंगटन हैज एनकरेज दैट अफगान लीडरशिप टू वर्क टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट, प्रपोज टॉक्स विद तालिबान टू सिक्योर द पीस अकॉर्ड. तो सब लोग चाहते हैं कि तालिबान जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट बन जाए. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी अ लॉजिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ तालिबान. तो ये इसका एक अच्छा सॉल्यूशन माना जाएगा. और तालिबान अगर आता है तो डेफिनेटली आप जो है पीस एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, और शांति एक्सपेक्ट कर सकते हो. इट विल ब्रिंग रीजनल स्टेबिलिटी. सो बिडेन इज रिव्यूइंग वेदर टू स्टिक टू द डील विद तालिबान नेगोशिएटेड बाय हिज प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रम्प. ओके, हु वांटेड टू पुल आउट यूएस ट्रूप्स.
Now, Biden administration has signaled that it wants to take a hard look at Trump deal and its repercussion for Afghanistan and regional stability. So one of the thing is that will Taliban be ready to maintain peace? क्या तालिबान डेमोक्रेसी के साथ काम कर पाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये. Okay, so US Secretary of the State Blinken wrote a letter to Afghan leader encouraging them to form a new inclusive government. So US withdrawal is being complicated by a new surge in fighting and concern that a speedy exit may only unleash further chaos. यूएस अगर जल्दी से वहां बाहर निकलता है तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज तालिबान इज स्टिल कंटिन्यूइंग द वायलेंस. तालिबान अभी भी वायलेंस जो है वो कर रहा है. ओके, सो ये जो है आपको समझना है. सो मोनिका सर, राज मल्होत्रा में ऑनलाइन कोर्सेज हैं क्या एससीएस के लिए? प्लीज 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 बता. यस, वी हैव एन एससीएस ऑनलाइन कोर्स. ओके, आपको जो है एससीएस के लिए ऑनलाइन कोर्स मिलेगा. यू हैव टू कॉन्टैक्ट द डेस्क. आपको सबसे पहले डेस्क को कॉन्टैक्ट करना है. ओके, so they will give you the clarity. So online courses are available. So railway freight usage surpasses the financial year 20 level. Now you have to understand this is a debate. Okay, कि freight versus पैसेंजर होता है हमारे देश में. क्यों पैसेंजर होता है? बिकॉज हेयर यू हैव टू गिव सब्सिडी. आपको पैसेंजर पे सब्सिडी देनी पड़ती है, और वो सब्सिडी के लिए पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा जो है आप यहाँ से लेके आते हो फ्रेट से. अब इसका नुकसान क्या होता है? बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज द फ्रेट चार्जेस. आपको फ्रेट के चार्जेस बढ़ाने पड़ते हैं, एंड योर फ्रेट बिकम्स अनकॉम्पिटेटिव. आपका फ्रेट जो माल गाड़ी का सिस्टम होता है वो अनकॉम्पिटेटिव हो जाता है. ओके, बिकॉज यू हैव अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट. आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है रोड ट्रांसपोर्ट का जो ट्रक से चलता है. ठीक है ना? सो ऑल दिस डिबेट इज इंपॉर्टेंट, एंड इन दैट पर्सपेक्टिव दिस इज द न्यू डेवलपमेंट. अगर रेलवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसका यूज करोगे. सो रेलवे ऑन फ्राइडे सेड दैट इट्स फ्रेट लोडिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 हैज ऑलरेडी सरपास द लेवल जो पहले था. ओके, सो थिंग्स आर इंप्रूविंग कि फ्रेट का ज्यादा यूज किया जा रहा है रेलवे का. ओके, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ गुड थिंग. Okay, so emerging from deficit, now this is a huge achievement. Particularly there was disruption of rail service. पूरा का पूरा disruption हो गया था कोरोना टाइम पे रेल सर्विस का. So as per the details shared by the railway, there was a shortfall of about 50 million ton in loading of coal, which comprises half of the freight. अब बात ऐसी है कि कोल के ऊपर आप ज्यादा डिपेंडेंट हो. ओके, आपका आधा पैसा तो कोल से ही आ रहा है. Now you need to understand we are going for energy diversification. हम लोग तो रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं. तो इन द फ्यूचर योर डिपेंडेंस ऑन कोल विल गो डाउन. जो आपके रेलवे का फ्रेट सिस्टम है उसकी डिपेंडेंस आपके कोयले पे कम होएगी. सो उसका नुकसान क्या होगा? डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर रेलवे की इनकम जो है वो कम होने वाली है. इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि भविष्य में रेलवे की इनकम जो कोल से आती थी वो कम होगी, क्योंकि हम लोग कोल से डाइवर्सिफाई हो जाएंगे. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिबेट जो आपको यहाँ पे समझनी है. ठीक है ना? सो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है. ये डिबेट आपके रेलवे के फ्रेट से रिलेटेड है, और ये आपके आंसर में फिगर इन होनी चाहिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ग्रेट डे अहेड. गायत्री, गुड मॉर्निंग. हर्ष, फिजिकल क्लासेस नहीं है? फिजिकल क्लासेस है हमारे यहाँ पे. यू कैन कॉन्टैक्ट द डेस्क. आपको डेस्क से सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ग्रेट डे अहेड. थैंक यू वेरी मच.